So we are going to discuss about two models now, that is may and might. So as last time we were using can and I used the word capacity, ability, strength. Now when we use the word might and may or may and might, we use one single word, that is possibilities. Possibilities. May and might have nothing to do with the can. Nothing to do with the can. First of all, you remember this. When you say, when you use may or when you use might, you are talking about possibilities. Anything may happen or anything may not happen. You say, it may rain. It may rain. When you say it may rain, it means there are 50-50 possibility. It may rain also, it may not rain also. When you are using might, there is a least possibility. There is a least possibility. When you are using might, there is a feeling of perhaps. There is a feeling of perhaps. जैसे आप कहें कि जैसे मैं कहूँ सी माइट ज्वाइन द क्लास, इसका मतलब वो शायद ही क्लास ज्वाइन करे. सी माइट कम टुडे, वो शायद ही आए. आई माइट गो देयर, मैं शायद ही वहाँ जाऊँ. अगर मैं कोई भी बात ऐसी हो सकती है, आप कहते हैं आई मे गो देयर. आई मे गो देयर और मे बी आई गो देयर हैव द सेम मीनिंग. आप कहें मे बी आई गो देयर, मे बी आई ज्वाइन दैट कंपनी, मे बी आई अटेंड द क्लास. You say I may attend the class or you say maybe I attend the class have the same meaning. किसी भी सामान्य सेंटेंस में अगर आप सबसे पहले मे बी जोड़ दें तो उस सेंटेंस में 50-50 पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो. आप कहें आप मुंबई जाने के, मे बी आई गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, हो सकता है मैं अगले महीने मुंबई जाऊं. मे बी आई गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ. ठीक है, लेकिन जैसे ही आप माइट लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी का लेवल एकदम कम हो जाता है. इट इज ऑलमोस्ट निल. इट इज ऑलमोस्ट निल. ही माइट कम, वो शायद ही आए. आई माइट गो देयर, मैं शायद ही वहाँ जाऊँ. इट माइट हैपन, ऐसा शायद ही हो. इट माइट हैपन, ऐसा शायद ही हो. ये हैं मे और माइट. सो रिमेंबर, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मे, देर आर 50-50 पॉसिबिलिटी. व्हेन यू आर यूजिंग माइट, देर इज अ फीलिंग ऑफ परहैप्स, देर इज अ लीस्ट पॉसिबिलिटी. नाउ let's talk about interrogative form of may. That is very important. So first of all, when may is used in interrogative form and if it is used with I, maximum time may is used with I or sometime with we, I and we. So may is used in interrogative with may and I for permission. When you are asking for permission, जैसे आप लोग मेरे से कहते हो सर कोई भी बात, when you come to the class you ask for the permission, may I come in. When there are group of people, they can say may we come in. So basically may is used with I and we for permission. And as we already know that English is extremely formal language, so may is very much used as far as even small permissions are concerned, even small formalities are concerned. Somebody is sitting, you want a permission, may I sit here, may I use your pen please, may I see your mobile please, may I have a glass of water please.
ठीक है. Anything when you are asking for permission. Remember this, when may you are asking for permission. As far as may I and may we is concerned, right? When may is used in interrogative form, when may is used in interrogative form with other subjects except I, so that is used for blessings and well wishes. When you say may you top this year, when you say may you top this year, तो इसका मतलब है भगवान करे कि आप इस साल टॉप करो. इसका कोई संबंध किसी परमिशन या पॉसिबिलिटी से नहीं है. रिमेंबर दिस, लेट मी रिपीट इट. When you are using may in interrogative form and you are using other subjects except I and we, so it is used for blessings and well wishes, and it is used too much. आप लोग बर्थडे विश करते होंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. मे यू लिव लॉन्ग, जिसको आप हिंदी में कहते हो दीर्घायु हो, संस्कृत में कहते हैं आयुष्मान भव. That is called may you live long. May you be prosper and happy. May you get whatever you want in your life. May your life be fulfilled with everything. ये सारी चीज़ें may की यूज होती हैं.